नमस्ते। आज का फेसबुक लाइव थोड़ा सा डिफरेंट है और थोड़ा यूनिक है। सबसे पहले तो ये फेसबुक लाइव क्यों मैं कर रही हूँ, ये फेसबुक लाइव मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि काफ़ी ऐसे लोग हैं जो अभी भी इंडिया से दूर हैं और इंडिया आने की वेट कर रहे हैं। Some of them, they are waiting to fly with the special Vande Bharat flight, the repatriation flight or the evacuation flight. So few days back I took this special Vande Bharat phase 4 flight from Europe to India, and that is the reason I thought that let me make this Facebook live special where I'm going to share my experiences about this Vande Bharat flight. So let me first welcome all those who are watching me live. I can see Swamiji, I think you are in India, and so nice to see you. So all those who are here right now, just send me a thumbs up so that I'm aware that who all are here with me. I can see Mr. Zoltan from Budapest. So welcome. How are you doing? So nice to see you. So the purpose is that it should be very comfortable for all of you to take this flight, and whatever questions, whatever queries you have with regards to the Vande Bharat flight, you are most welcome to ask me, and I will be giving the answers to all the questions. So I think it will be more convenient, it will be easy, and that's the purpose. So let everyone join in, and then I'm going to start. It's a small Facebook live because the purpose is different today. So yes, I can see some of my friends, and they are here. So hello everyone, good to see all of you virtually. And fine. So let me start with what we are going to talk about. As I mentioned, that I've recently taken this Vande Bharat phase 4 flight from Europe to India, and the purpose is that I'm going to share my experience, whatever questions and queries you have with regards to this special flight, in case you are traveling, your family or some friends are traveling. So it will be more convenient, because when I was traveling I had some questions in my mind, and I used to ask some of my friends who really helped me out and made me comfortable with all the answers. I can see Noreen ma'am. Noreen ma'am, how are you? Kaise hain aap? Okay. And I can also see a very good friend of mine, Shashank from Mumbai. Okay, so let me start. What you're supposed to do is that first of all, you will be getting a ticket. So for example, I'm now giving my example. I was traveling from Europe to India, and this special Vande Bharat flight is picking up, they have made some center points. So like my center point was Frankfurt, that is Germany. So in Germany, all people across Europe, they were gathered at Frankfurt airport, and from Frankfurt to Mumbai it was a direct flight. So so definitely from whatever destination you are traveling from. So for example, I was in Hungary, so from Hungary to Frankfurt, one flight, simple. And then at Frankfurt, all of the evacuated people who wanted to come back to India, they were all assembled there. So Air India, they give a very special ticket. It is not like a normal ticket. I will just show you everything. So this was the ticket, how it looked like.
like an examination paper, like a question and answer. So it's a very, so just highlighted the main points. So the main points were, whenever you are traveling, what are the main points? How much luggage can you carry? So if it is first or business class, you can carry 2 pieces, and the weight is going to be 32 kgs each. In case you are traveling through economy, then again 2 pieces, and weight is 23 kgs each. Okay, that is simple. And then coming to the carry-on baggage. So carry-on baggage, 1 piece of carry-on baggage of 8 kilograms plus laptop stroke ladies purse. So it can be either or, okay? It cannot be both. So it can be either a laptop bag or ladies purse. And the carry-on bag should be 8 kgs. Now there was a little confusion for me, because in the ticket it says that the cabin baggage should be of a dimension of a particular dimension, which was very, very small. The dimension was 14 centimeter plus 40 centimeter plus 30 centimeter plus 15 centimeter, which was looking like a very small, like a laptop bag, which is very small. So again, this was confusing, but finally it was fine, because I spoke to the Air India staff. They said that it should not be more than 8 kgs. So that was sorted. So I think with regards to the ticket and this was the thing. Now, whatever questions you have, please keep on sending me the questions so that I can answer all your queries and answer all your questions with regards to your travel, in case you have some. In the ticket, it is also mentioned that web check-in is compulsory for all flights. Another question was that if web check-in is compulsory, why were we not able to check in? Because check-in was not happening. So if that is the problem, no worries. You should be there at the airport 4 hours before the flight, and you can do the check-in right at the airport, and they will be giving you the boarding pass after checking your temperature. Okay. Hello Anup and Tanvi. Hi, good to see you. And I can see Karan, Mukesh, and my family members, and of course Drino from Bosnia. I can also see Mr. Nikalje from Mumbai. Thank you so much. He's welcoming me. Okay. So now step by step. So once you reach the airport and you do your check-in, for example, as I was traveling from Mumbai, so I did my check-in right from Budapest. So I was not carrying any check-in luggage with me. So it was checked in right from Budapest. Okay. So one question is this, many of us have this question, because those are 2 different flights, but they do this. Okay. So you can check in from your starting point till the destination your luggage will reach. Before getting your boarding pass, it is very important that they will be checking your temperature. So they will check your temperature. If the temperature is perfect, then only you will be given your boarding pass. Simple. Once the boarding pass is with you, that means for sure now you're traveling to your country. One very funny thing happened with me, that when they were in Germany, when they were checking my temperature, so they have this
gadget where they have to just press and they get the temperature. So I was just standing there, and the German guy, he just did this, and just look at his expression. He was like, and then he did like this. And then he called some of the colleagues to check. And I was like, hey, well, what's that? And then they were like, only expressions. I could judge the expressions. And then I asked, what happened? So he said, it's low. So I said, really? How much? So he said, well, the battery is low. So that was a little funny. And then finally I got the boarding pass. A few things which are important is that it will be good if you carry this N95 mask, something like this. You can carry this mask with you because I think it's convenient and safe. And not with that, you have that gadget, not with that. It should be a complete packed mask so that the face is covered properly. When you will be entering your flight, then right on your seat there will be a bag, something like this, kept right on your seat. In this bag you have all your meals packed, and you also have this kind of a thing, which is they give you a mask, they give you a shield, a face shield, and they also give you some sanitizers, so which is again very, very comfortable. So all these things are provided by Air India. This was another question, that do we have to buy our own shield? No, they provide you with this shield, this mask, sanitizer, and along with that you have your meals. It is very important that you should carry some warm jacket with you. It is very important because inside the flight it is cold. It is for almost 8 hours, so you should be comfortable. They are not providing with any pillows, any cushions, any blankets. This is going to be very, very comfortable, so that resting your neck is very important. So you should carry this definitely. If you're not having it, you must buy one. It's very, very helpful. Must carry your jacket. Gloves were not there in the bag, so you must carry your own gloves. Very important. And then what else? What else is important? Another thing is, yes, you must have some cotton with you so that you can just plug in these little cotton in your ears. That will be comfortable. As I always mention in my yoga sessions, to apply little oil inside the nostrils, inside the ears, so that it is little moist and the virus cannot attack directly. So I always carry a small bottle of mustard oil with me, always, because this is really helpful, because at Frankfurt I had around 10 hours. That was the 10 hours was the layover time at Frankfurt. So it was important for me to be very careful at the airport and just apply the oil so that you are comfortable. Another thing is that definitely you should be completely isolated. Isolate yourself, stay away from gatherings, at the airport.
So I was just looking for a corner where I could be comfortably sitting, and there is no one around. So just keep looking for a corner which is absolutely a vacant kind of a space. That is important. And throughout the flight, as one of my very good friends, Divya, she told me that I didn't eat anything or drink anything during the flight. It's it's a very good tip, because whenever you are eating something, then you have to take off your mask, and that is again something which you should not do it. So during my flight, I didn't eat anything. So in that bag, whatever was kept, it was kept. So before boarding the flight, I ate something, and that too, it was a homemade thing. Again, one of my friends, she cooked something for me, and I was just eating that. So that it's always better not to eat anything at the airport as well. So yeah, so I think that was good. That was a good tip. The moment I entered the flight, again, I was also very sleepy, so I just slept. And covering yourself completely. Now this shield is very tight here. So for some time it was fine, but after a while, then what I did was that I wore some like glasses, and the mask was there, gloves were there, and I covered myself completely with the scarf, घूंघट कर लिया. Obviously you won't feel like talking to anyone who is sitting next to you, because you don't want to do that, so don't encourage that. And the flights are completely full. There are no vacant seats, because it's a special flight, so there are no free seats. So it will be like, one person sitting here, one person sitting here, so everyone is like just next to each other. The person who is sitting in the center, for them, the flight people were giving PP suits. So it's not a very big deal actually. I just saw the suit. It's like a shower bathrobe, and a cap. So that was also comfortable. So yeah, I think flight was good. The captain was really nice, and he looked like a very patriotic captain, and he was just talking to us throughout the flight. And in between, at night, there was an announcement that you people are really lucky, because on the left side you can see Venus. And we were like, okay. And then he was explaining about how to see from the people who are sitting on the left side of the plane, and it was nice to see something right in the center of the sky, and it was so beautiful. And then finally the captain, he was talking in Hindi completely. तो आपको वो एक बड़ी अच्छी पेट्रियाटिक फीलिंग मिलती है, देशभक्ति वाली. और जैसे ही हमारा प्लेन लैंड किया, तो हमारे कैप्टन ने बोला है कि आप सभी का आपकी मातृभूमि में स्वागत है. तो सच में रोंगटे खड़े हो गए कि सही बात है, कितना अच्छा लगता है अपने देश में वापस आकर. और बहुत ही अच्छी फीलिंग आई कि हम सब लोग सेफली पहुंच गए हैं. और फिर मैं आपको बताती हूँ उसके बाद का प्रोसेस, ताकि मेन मकसद मेरा ये है आज का फेसबुक लाइव का, कि जितने भी प्रश्न मेरे दिमाग में चल रहे थे, आप लोगों के भी चल रहे होंगे, अगर आपके कोई रिश्तेदार आ रहे हैं या आप खुद आ रहे हैं, जा रहे हैं, तो ये बहुत एक रेकनर रहेगा आपके लिए. आपको कोई भी क्वेश्चन है, आप मेरे को यहाँ लिख सकते हैं, मैं आपको अभी इंस्टेंटली उसका आंसर दे दूँगी. जब एयरपोर्ट पे लैंड करने से पहले हमको फ़्लाइट के अंदर ही एक फॉर्म फिल करने को कहते हैं, जिसका डिक्लेरेशन फॉर्म कह लीजिए, या फिर वो कहते हैं उसको हेल्थ एंड इमिग्रेशन काउंटर पे आपको जाके दिखाना है. एक हेल्थ फॉर्म है जो मिनिस्ट्री
ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से दिया जाता है। ठीक है, इस तरह से फॉर्म होएगा। एक डबल फॉर्म है, मतलब उसका फ़ोटो कॉपी ना करना पड़े, इसलिए उन्होंने सेम चीज़ 2 बार लिखी हुई है। बहुत सिंपल सा फॉर्म है। उसमें ये लिखा हुआ है, जैसे आपने अपना नाम लिखना है, सीट नंबर लिखना है, फ़्लाइट नंबर लिखना है, पासपोर्ट नंबर लिखना है, आपकी नेशनैलिटी लिखनी है, एज, डेट ऑफ अराइवल, कहाँ से आपने अपनी जर्नी की शुरुआत करी है और आपका फाइनल डेस्टिनेशन क्या है वो लिखना है। उसके बाद आपने अपना एड्रेस लिखना है, एड्रेस जहाँ पे आपने अभी वापस अपनी लैंडिंग के बाद कहाँ पे आपने जाना है वो एड्रेस लिखना है। आपने अपना मोबाइल नंबर लिखना है, ईमेल आईडी लिखना है। बस ये एक सिंपल सा फॉर्म है। इसको वो आपने ऊपर और नीचे डुप्लीकेट दोनों को भर देना है और इस फॉर्म को आप अपने साथ ही रखेंगे। तो अब आपके पास क्या क्या होना चाहिए जब आप उतरेंगे? आपके पास ये फॉर्म होना चाहिए, आपके पास आपका बोर्डिंग पास होना चाहिए और आपके पास आपका पासपोर्ट होना चाहिए और कोई और स्पेशल आईडी कार्ड अगर आपका है तो वो होना चाहिए। जैसे कि मैं एक मिशन में थी बाहर और हम लोगों के पास डिप्लोमेटिक पासपोर्ट, ऑफिशियल पासपोर्ट होता है, बट आजकल के टाइम पे उन्होंने सभी को एक तरीके से करके उन्होंने सबका ही एक प्रोसीजर रखा हुआ है। तो खैर आप लैंड करते हैं, आपके पास ये डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। सबसे पहले क्या होता है, जैसे ही आप लैंड करेंगे तो आपको पहला स्टेप क्या था? हाँ, पहला स्टेप था कि वो पूछते हैं कि आपने ये हेल्थ फॉर्म भर लिया है। वो भर के तो वो कहते हैं कि आप इसको बाहर निकाल लीजिए। तो बाहर निकालते हैं। सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ध्यान रखा जा रहा है और एक लॉट को भेजते हैं, एक लॉट को बिठा देते हैं ताकि भीड़ ना रहे, भगदड़ ना रहे। और उसके बाद सबसे पहले स्टेप में आपको ये जो फॉर्म है उसको वो ज़ेरॉक्स करके आपको पकड़ाते हैं। ठीक है, तो वो पहला स्टेप हो गया ज़ेरॉक्स करके। फिर दूसरा स्टेप होता है, वो बोलते हैं कि आपने क्या अपने मोबाइल पे आरोग्य, कौन सा ऐप है वो, आरोग्य सेतु ऐप, आरोग्य सेतु ऐप जो है वो आपका डाउनलोडेड है। आप बोलेंगे जी हाँ तो आपको एक लाइन में भेज देंगे, आप बोलेंगे जी नहीं तो कहेंगे आप पहले डाउनलोड कर लीजिए और उसके बाद फिर नेक्स्ट स्टेप होगा। तो उस ऐप में आपको आपकी एक सेल्फ असेसमेंट होती है, पता चल जाता है आसपास किसी को है या नहीं है। तो वो कुछ काफ़ी अच्छा हेल्पफुल ऐप है, तो वो आपको ऐप को डाउनलोड उसी समय करना है। ये सेकंड स्टेप हो गया। सेकंड स्टेप के बाद आपका आता है थर्ड स्टेप। थर्ड स्टेप में आपका आ जाएगा इमिग्रेशन स्टैम्प। इमिग्रेशन स्टैम्प में आपने अपना सारे डॉक्यूमेंट्स दिखा के वो आपको स्टैम्प लगवाना है, वो वाला प्रोसेस हो जाएगा। उस प्रोसेस के बाद नेक्स्ट स्टेप कस्टम्स। अगर आपको कुछ कस्टम्स में डिक्लेयर करना है तो आप उस लाइन में जाएंगे, अगर नहीं करना है तो आप दूसरी लाइन से जाएंगे। कस्टम्स में भी बहुत एक क्वेश्चन मेरे हमेशा दिमाग में होता है कि अगर कोई बाहर से ट्रैवल कर रहा है तो कितने डॉलर्स आप रख सकते हैं जिसमें आपको कस्टम्स को डिक्लेयर करने की ज़रूरत नहीं है। ये मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन काफ़ियों के दिमाग में आता है। तो मैंने वहाँ के कस्टम्स वाले से ही पूछा ताकि ये इन्फॉर्मेशन हमारे पास सही हो। कोई कहते हैं 10,000 भी हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कस्टम्स वाले ने बोला अगर 5,000 या 5,000 से नीचे USD आपके पास है तो आपको डिक्लेयर करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। उसके बाद हम वहाँ से चले जाएंगे। कस्टम्स का हो गया। फिर नेक्स्ट आपका बैगेज। बैगेज के लिए बहुत सिंपल है कि वहाँ पे आपका बैग आपको बैगेज बेल्ट से मिलेगा, वो हो जाएगा। बैगेज बेल्ट से आपने अपना बैग ले लिया। उसके बाद अब आप बाहर की तरफ जाएंगे। अब बाहर की तरफ जब जाते हैं तो मेन मसला आता है क्वारंटीन होने का तो इसके लिए अब आपको क्या करना है। तो हम जैसे ही वहाँ से बाहर जाते हैं तो आपको वो पूछते हैं कि भाई आप मुंबई वाले इधर आ जाए। ठीक है, मुंबई से बाहर वाले इस लाइन में आ जाए। तो आपने जहाँ जिस डेस्टिनेशन में जाना है उस हिसाब से, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप मुंबई लैंड करें बट आपने जाना पुणे है या आपने जाना नासिक है तो वो मुंबई से बाहर वाले हो गए, और अगर आप मुंबई के हैं तो आप मुंबई वाले उसमें आ गए। ठीक है,
बस फिर वहाँ पे आप जब चले जाएंगे तो आपसे पूछेंगे कि आप कैसे जा रहे हैं। तो अगर आपके कोई ड्राइवर आ रहे हैं या फिर कैसे आपका प्लान है जाने का। तो खैर मैं खुद ड्राइव करके जाने वाली थी, तो उसके लिए एक मेरा ई पास बना। ई पास उसी समय फटाफट बन जाता है। वो ई पास के ज़रिए आप ट्रैवल भी कर सकते हैं, अपनी गाड़ी चला सकते हैं। और फिर उसके बाद क्वारंटीन की बात हो रही है तो मुंबई में जो ज़बरदस्त स्ट्रिक्ट रूल्स के हिसाब से होम क्वारंटीन का ऑप्शन है ही नहीं। ये मेरे को क्लियर हो चुका है कि मुंबई में होम क्वारंटीन का ऑप्शन है ही नहीं। आपको होटल में ही रहना पड़ेगा। शुरुआत के 7 दिन आपको होटल में रहना पड़ेगा और उसके बाद उन दिनों में आपका टेस्ट होएगा और टेस्ट होने के बाद अगर आप नेगेटिव आते हैं तो 7 मोर डेज होम क्वारंटीन रहेगा। ठीक है। अब आपको वहाँ पे लिस्ट दे दी जाती है आपके अलग अलग रीजन के हिसाब से। आपको जो भी होटल चूज़ करना है, आप वो कैटेगरीज होती हैं। गवर्नमेंट का है 3 स्टार, 2 स्टार, 3 स्टार, 5 स्टार, इस तरह के ऑप्शंस होंगे। आपको जो भी होटल कन्वीनियंट लग रहा है आप उसमें बोल दीजिए हमें वहाँ जाना है और आप चले जाइए। और फिर उसके बाद अभी फ़िलहाल मैं भी होटल में ही हूँ और एक आध दिन में 2 दिन में शायद डॉक्टर आके वो टेस्ट वगैरह करेंगे। उसके बाद भगवान ने चाहा तो नेगेटिव आएगा और फिर मैं होम क्वारंटीन कर सकती हूँ। तो ये बहुत सिंपल सा प्रोसेस था और इस प्रोसेस को फॉलो अप करेंगे तो आपको आई डोंट थिंक सो कोई प्रॉब्लम आएगी। जितने भी मेरे दिमाग में क्वेरीज थी मैंने तभी उनको बहुत डिटेल में आपको इसमें बता दिया है, ताकि अभी भी अगर आपको लगता है कोई और क्वेश्चंस हैं, क्वेरीज हैं, आप प्लीज़ पूछ सकते हैं लिख कर, ताकि हो सकता है किसी और का भी वो क्वेश्चन हो तो वो आंसर हो जाएगा। और इसको आप ज़रूर अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करिए इस फेसबुक लाइव को, ताकि जितने भी क्वेश्चंस हैं औरों के भी वो भी सॉर्ट आउट हो सके। और आपकी यात्रा शुभ रहे, आप अपना स्वास्थ्य का ध्यान रखें और बस स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। बाकी बहुत इम्पॉर्टेंट होता है कि अवेयर रहना, थोड़ा अलर्ट रहना। जितने भी जैसे अगर आप कोई डोर का दरवाज़ा खोल रहे हैं तो हमेशा एक टिश्यू पेपर मेरे हाथ में रहता था, या ग्लव्स तो होते ही थे। साथ साथ सैनिटाइज करते रहिए और अपना ध्यान रखिए। तो थैंक यू सो मच, आप लोग आए और आप लोगों ने सुना। और एनी अदर क्वेश्चंस इफ़ यू हैव, आई एम विलिंग टू आंसर दैट। बाकी टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ and stay fit, stay healthy, and we will again be catching each other very soon, because hotel quarantine में काफ़ी टाइम है मिल रहा है। तो I think I will be taking up few sessions so we can do some yoga sessions together and staying fit and healthy, and that will be good way to connect with each other. Okay, now there is a question. Welcome to Bharat. Thank you so much. Are there currently Bharat flights from Spain? If there is, how to find out about them? Okay, yes. How to find uske liye, sorry, for that, what you're supposed to do is that follow Air India on your Twitter. Follow Air India on your Twitter. And Air India, whenever they are starting with any new flight, they instantly tweet on their Twitter account. So please do follow Air India on your Twitter, and so that immediately you will get the information that now this is the phase 4, this is the phase 5, and this is something which is coming. So you can get to know about that. Okay, and you can book the ticket. Okay, any tests done on arrival? At the airport, Mr. Nikalji, no test was done at the arrival. Only temperature check was done. Corona test will be done in the hotel. In the hotel it will be done.
Even when I started my journey from there also, there was no test done, only temperature check was done. And that's it. Any other question? If you have, do ask me. I'm just checking in case I missed. In case if relatives come to the airport, can you meet them? Of course you can meet them. So I met my brother. He was there because we were planning to do a home quarantine. So he was there to pick me up. But we were in separate cars so that I was not in contact with him. So of course we had a chat, and he was there with me in the other car. I was driving the other car, and he dropped me till the hotel, and we just had some conversation. But then after that, no contact, just video calls. Any other question? Thank you so much, Rajni, for your positive vibes and your prayers. And I can see Pramila, my good friend from Mumbai. How are you, Pramila? Milan, Manju from Bangkok. Bob, hi Bob. Adam, hi Adam. Rohini, the famous RJ. How are you, Rohini? Lakshmi is also watching. Sanjay, hi Sanjay. Yudit, hi Yudit. Rashmi ji. Sanchali, hi Sanchali. Sanchali is my neighbor when I'm back. सोमवीर जी कैसे हैं? हाय नीतू. हे कार्तिक. Ridina. Manish sir, how are you? Manaswini, how are you? Super. So I think no more questions. That's it. So okay, another question. I don't know if you mentioned this. Do you have to go through quarantine on arrival in India? Oh yes, I mentioned that. Right now I'm in the hotel in my quarantine period. So 7 days hotel quarantine is a must, and after that 7 days home quarantine. Any other thing? I think it's sorted. Perfect. All right, so if you have any other questions, you can please write to me here, and I will get back to you with the answers. And take care of yourself, stay fit, stay healthy, take care. Namaste, everyone. Feels so nice to be back in India. Vande Bharat.